ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रियल ऑब्जेक्ट्स वर्सेस वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट वर्सेस व्हाट इज अ रियल ऑब्जेक्ट। जो आप तो कभी जानते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब एनी ऑब्जेक्ट विच कैन एमिट लाइट on its own, right? This is an object and light rays can start from this object and go in different directions, right? So ये है light rays actually start from it and go in all possible directions. Pen, pencil, table, chair, fan, sky, tree, people, everything is a real object. ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, रियल ऑब्जेक्ट हम समझ गए, जो आप जानते हो ऑब्जेक्ट, वही जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, जहां से रेज खुद स्टार्ट हो सकती हैं और दे कैन गो एनीवेयर, राइट? सो दिस इज आवर रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स से this is a plane mirror. I'm taking one example which I think all of you are very familiar with, right? Because at this age you are spending a lot of time in front of mirror, I'm sure. ठीक है, ऐसे plane mirror, okay? So object is यहाँ पे रखा हुआ है and I can take two rays from it. These rays will get reflected like this, and when you produce these rays backwards, they appear to meet at this point, right? It's called this eye. So this is a real object, right? Light rays actually start from it and they can go anywhere. Here, now imagine another situation, a plane mirror like this, two rays happen to fall on this. Now we are not bothered from where these converging rays are coming. There could be any other optical phenomena which might have occurred before this and these converging rays are coming towards this mirror. The point is, if this mirror wasn't there, understand this properly, if this mirror wasn't there, in that case these rays would have happily converged at a point here if this mirror was not there. But what will eventually happen, at this point they'll reflect. At this point these rays will reflect like this, right? So what has happened, this phenomena we cannot perceive or understand with the conceptualization of a virtual object, because there's a real image formed by a plane mirror. Till now you have been knowing plane mirror can only form virtual images, but in front of you I have given a very simple case where rays are actually cutting after reflecting from the plane mirror, and when the rays actually cut each other, we know real image is formed. So we are for sure that this image, whatever it is a real image. Now a real image, but where is the object? There was no object.
So the object we conceptualize as this was the object, but we cannot call it object because if we call it object, ये object नाराज हो जाएगा, बोलेगा बॉस तो मेरा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, अगर ठीक है तुम शांत रहो, मैं इसको बोल देता हूँ ये मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एंड प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए रियल इमेज फॉर्म करता है, रियल इमेजेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम ये तो अपने एक फिनोमेना समझ लिया कि दिस इज हाउ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज कंसेप्चुअलाइज्ड, बट हाउ डू आई डिफाइन दिस, राइट? वी विल डिफाइन वर्चुअल ऑब्जेक्ट एज if light rays appear to converge, if light rays appear to converge at a point before the optical phenomena, if light rays appear to converge at a point before the optical phenomena, मतलब अगर optical phenomena नहीं होता, they would have converged at a point, and that point is called the virtual object. इसको definition wise हम कैसे लिखेंगे? If light rays appear to converge at a point before optical phenomena. When that point is ठीक है। Now what is this optical phenomena? This primarily can be two things, either reflection or refraction. These are two broader classification of any optical phenomena. Whatever optical phenomena we will learn will be under either reflection or refraction. So इसके पहले, before this happens, these light rays appear to converge, and that point is called virtual object. Now you might be wondering from how this can happen, sir. ये यहाँ पे जो आपने बनाया है, right? Sorry. How these two rays would have originated, diverging rays, right? Converging rays. कैसा होता है? There are various. अच्छा, इसको आप ऐसे समझ लो, मैं इसको आपको इस तरह से समझाता हूँ, because these are the kind of questions you will get. मान लो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये आगे की चीज बता रहा हूँ, बट आप आई होप कि आपने थोड़ा बहुत कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रखा होगा, ठीक है? मान लो इस कॉन्वेक्स लेंस से दो रेज ऐसे निकला गई, पैरेलल रेज, दे वुड हैव कन्वर्ज्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक रियल इमेज इस ऑब्जेक्ट की बन जाती। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? रेज को कन्वर्ज कर देता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस, पर अभी जस्ट एक बार ऐसे समझ लो, याद कर लो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये कन्वर्ज हो जाती है। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इससे पहले कि ये कन्वर्ज होती, बिफोर दे एक्चुअली कुड कन्वर्ज, यू हैड पुट अ सेट अप अ प्लेन मिरर हियर. So now what will happen? These two rays would actually not be converging here, right? Because before they could converge, they will reflect. अभी रिफ्लेक्ट होके हो सकता है कुछ ये यहाँ पे इमेज बना देने से. This could be my final image here at this point, right? So अभी to understand this, we have only one way to conceptualize the virtual object here. This is the virtual object, let's say O dash. अब बात समझ में आ रही कि कैसे ओरिजिनेट होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट. दिस विल, आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कई बार आपको इस चीज को
समझना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और उसके बाद सब्सिक्वेंट इमेजेस बन रहे हैं. सो एंड द ब्यूटी इज कि विद दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसेप्चुलाइजेशन I can put n number of optical phenomena one after another. What we will do is the probable image of one becomes the object for the next. So if you had let these rays converge, this image would have formed here, but that image has actually taken a role of virtual object for this plane mirror. ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये दिमाग में थोड़ा क्लियर रहना चाहिए हमको, क्योंकि नहीं तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम करने में हमको थोड़ा ट्रबल आ सकता है डियर. ठीक है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है वैसे तो. ठीक है, if you let them converge, they'll come here. That means it is a virtual object, and this virtual object behaves like a object for this plane mirror. थोड़ा अगर देखो तो कितना अजीब लगता है कि behind the mirror there is an object and there is an image being formed, but this is how it is the best way to understand this. ठीक है, okay. Now we will talk about virtual image and real image. So we talked about real objects and virtual objects. Now we are talking about virtual images and real images. पहले रियल इमेज लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है. If light rays actually converge at a point, but after the optical phenomenon. That point is real. यहाँ पे क्या होगा? वर्चुअल इमेज. If light rays, we'll understand that while the definition complete कर लेते हैं. If light rays appear to diverge from a point after optical phenomena, that point is virtual image. That point is virtual image. I think this you might be aware, because virtual object is the only thing which you have not been told earlier, but I'm sure you might have studied virtual images and real images, right? Both type of mirrors that you have studied, concave mirror, convex mirror, and both kind of lenses you have studied. You know there are varieties of combinations of the object positions and devices which can lead to formation of a virtual image and a real image, right? But just for benefit of completeness, we'll just understand this quickly. Virtual image पहले देख लेते because we have already created. The definition was, if light rays, virtual image, if light rays appear to diverge, if light rays appear to diverge from a point after the optical phenomena, after the optical phenomena has occurred, that point is called a virtual image. So in this case, plane mirror, if you are viewing it from this side,
right? What you will feel that light rays are actually coming from this point, and that's why you have a sensation of image. और कैसे image होता है? आप सामने मिरर के खड़े होते हो, you feel that you are standing there, क्योंकि light rays reflect होकर उस point से आपके side आ रही हैं. हमारे माइंड में और आई में प्रोसेसिंग में वो एबिलिटी नहीं है कि वो इसको डिस्टिंग्विश कर पाए कि लाइट रे एक्चुअली यहाँ से टकरा के आए हैं. आवर माइंड इज नॉट ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दैट इज अ ब्यूटी. अगर ऐसा ट्रेन होता तो हमको इमेज दिखते ही नहीं. हम हमेशा ट्रेस कर रहे थे कि यहाँ मिरर रखा है, आप यहाँ पे खड़े हो और मुझे आप उस मिरर में दिख रहे हो, तो मैं समझ जाता कि आप तो यहाँ पे खड़े हो, मुझे तो मिरर दिख, मतलब वहां तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे वहां से सीधा आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट रेस तो डाइवर्ज होकर मेरे पास आ रही है, राइट? ऐसे ही होता है ना. तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट से इस व्यूअर को ऐसा लगेगा, अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पे व्यूअर है, यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे एक वॉल है, दिस पर्सन कैन नॉट रियली सी दिस ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, बट ही इज एबल टू सी दिस बाय दिस, राइट? तो उसे क्या लगेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सीधा रेज मेरे पास आ रही. हुआ क्या है, आफ्टर दिस ऑप्टिकल फिनोमेना which is reflection in this case, this light rays, they are appearing to diverge from this point, so this is a virtual image. ठीक है? Real image, light rays यहीं पे देख लो, light rays actually converge after optical phenomena. जो definition आपने लिखी है, light rays actually converge at a point after the optical phenomena, and this is a real image. ठीक है? रियल इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है, राइट? दिस इज काइंड ऑफ फिनोमेना वी हैव सीन एक्सपेरिमेंटली. इफ यू वांट टू टेक दीज इमेजेस ऑन स्क्रीन, यू कैन टेक इट. These kind of images, as they are virtual, there is no actual light ray traveling in this zone, so you cannot trace it, you cannot put it on screen, right? So that is one property you should be knowing. So are we clear with this concept? Real image, virtual image, real object, virtual object. Virtual object very critical. ठीक? चलो let's move on to next topic, reflection. Some of the basics you might already be knowing, so I'll be very fast. Reflection. What is this? Bouncing back of light in same medium. Bouncing back of light in same medium after, striking a surface. Means we're talking about a scenario where there's a ray of light, falls on a surface, or not necessarily this surface has to be shiny or polished. Reflection would happen anyways. If it is shiny surface, reflection will be prominent. If it is not shiny, it is diffuse surface, reflection would be less, right? But it will happen. So it does not really matter whether this surface is shiny or not. This light ray would get reflected back in the same medium, right? So it does not travel. I mean, we are not talking about light ray going into some other medium. It comes back in the same medium like this. Okay? So यहाँ पे what we do is, this point, this is called incident ray. This is just some terms, terminology you already be knowing. Incident ray. This is reflected ray. Very easy guys, आराम से आप इसको रिकॉल कर सकते हो चीजों को, right? This is called point of incidence. Point of incidence. This angle is called the angle between the incident ray and the normal. Please be clear. फोटो में बहुत सिंपल फोटो बनाया, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए. This is always the angle between incident ray and the normal. This is angle of incidence, and this is normal and reflected ray. This is angle of reflection. I is
angle of incidence, very easy, R is angle of reflection. Both these angles are measured from the normal, and as per the law of reflection, I is equal to angle R. And this normal is always drawn on the plane of incidence. Understand one thing, guys, when I say draw a normal on the point of incidence, we generally don't extend the line, which is wrong. Actually, I should have said draw a normal to the plane surface and in the plane of incident ray, because अगर मुझे सिर्फ इस लाइन के नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो तो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट? तो this normal I am talking about, which is present in the plane of this line. This line means incident ray. So incident ray के plane में एक normal draw करना है आपको, not any normal. Any normal could be anywhere, right? तो वैसा नहीं करना है. So it is, this normal has to be drawn in the plane of incidence. And the second law says that this reflected ray happens to be always in the plane of incident ray and the normal, which you have studied in a different way. You have studied that normal, incident ray and reflected ray, they are all in the same plane, which is bogus. Okay? What I am saying here is, you have a incident ray plane originally, you have to draw a normal in that plane only, and the rule says the reflected ray would be present in that plane only, in which this incident ray and the normal is present. So this is law 1 or 2, I don't know. I'm not really bothered about the numbers. One of these is 1, one of these is 2. This is law 1. And the second one is reflected ray is always present in the same plane as formed by इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. नॉर्मल का तो होना ही था क्योंकि आपने ड्रॉ ही वहीं पे किया हुआ है, उसी प्लेन. लॉ क्या बोले? रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में है. ना इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ज़्यादा जेईई मेंस पे भी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं. वो बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन पता नहीं इतना सिंपल टॉपिक बार बार क्यों आता है जेईई मेंस में. 1 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का देते हैं, वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, वो आपको करा देता हूँ मैं यहाँ पे. दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन कॉज्ड बाय अ प्लेन सरफेस. ठीक है, लेट्स पुट अ हेडिंग एंगल ऑफ डेविएशन. In all the competitive exams, is quite frequently asked question, angle of deviation. Let's say we have a plane surface like this, okay, and there's a ray which falls like this on the surface. We have drawn the normal and then we have drawn the reflected ray. Let's say this angle is I, this angle is also I, but we call it R. Okay, angle of reflection. Now, what is angle of deviation first? The concept of angle of deviation is in any optical phenomena. I am telling you angle of deviation for this optical phenomena, but concept wise, if we have to figure out angle of deviation in any case, the rule that you will follow is, this is the angle between incident ray
and emergent ray. I'm not using word reflected ray, I'm using word emergent, because whatever ray is finally emerging, right, that ray we are interested. So basically you have to trace two rays. One ray is this, it was going like this and has taken a turn. So what is, when we say deviation, it is the turn this ray has taken. Imagine yourself traveling in this direction. Imagine yourself traveling in this direction and something happens and you turn like this. So how much you have taken a turn, that angle we are interested in. So what you will do is you will extend this line. If there was no optical phenomena, you would be happily going along this path, right? Because of this optical phenomena, now you're traveling this path. That means you have traveled an angle. This angle is angle of deviation delta. This is your angle of deviation. We typically denote it with delta, this follow delta. Okay. So deviation कितना हुआ guys? This was the original ray and this is the new ray. This deviation you can just, आपको ये आराम से दिख रहा होगा बिल्कुल. This is 180 minus 180 degrees minus 2i. This is I. This is also I. This is I. This is also I. 2i. This is 2i. This angle is 2i. Total is 180. So delta is 180 minus 2i. This is the deviation. अभी 2022 में 2023 में मेंस में क्वेश्चन आया एंड नीट में आई एम नॉट, आई गेस इट वाज मेंस ओनली. ये क्वेश्चन था प्लेन मिरर angle of reflection was given as 30 degrees. A ray strikes a mirror and after reflection this angle of reflection is 30 degrees. They ask for this angle of deviation. 180 minus 2 into 30, this will be 120. This was the answer. 4 marks. Okay. So concept पता होना चाहिए. So इसी का एक extension है. So we have to remember this result as well. इसी का एक extension है, वो थोड़ा सा complicated है derive करने के लिए. But let's remember the formula because that is very famous question nowadays in lot many exams. Angle of deviation produced by two plane mirrors. Angle of deviation produced by two plane mirrors. बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इसका. Kept at an angle theta with each other. Right, so क्या है? There are two plane mirrors. There are two plane mirrors which are kept at an angle theta with each other. Right? Two plane mirrors kept at angle theta. Any incident ray falls now
let's say the original angle of incidence is I. On the first mirror when it falls, the angle of incidence is I. The final ray कुछ ऐसे जाएगी ये, ठीक है, फिर ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, राइट, यहाँ पे कुछ ऐसा नॉर्मल होगा. We are talking about the deviation produced by this combination. So what is the deviation? This is the original direction. If this combo of mirror was not there, this original ray would have gone like this. अभी किधर जा रही है डियर? ये अभी जा रही है, इसको आप थोड़ा देखो तो ये कुछ इसके पैरेलल लाइन अगर आप ड्रॉ करो, यहाँ इस लाइन के पैरेलल, ये वाला. सो दिस इज द डेविएशन कॉस्ट. आ रहा समझ में? इसके पैरेलल, तो ये ऐसे घूम गई, इसको पकड़ के किसी ने ऐसे घुमाया है ना. सो दिस एंगल, very interestingly, this angle of deviation is independent of original angle of incidence. Let's call this delta. Delta is 360 minus theta. This angle is 360 minus. आपको मैं ये टास्क दे रहा हूं, ये बहुत छोटा सा लाइन्स एंड एंगल्स का टास्क है. आप चाहिए तो आज घर में या कभी बोर हो रहे हो तो एक काम कर सकते हो, ये एंगल आई लो और ये एंगल जो है डेल्टा निकालने की कोशिश करो, ठीक है. दिस एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल आई को, ये आई लो, ये आई लो, ये एंगल निकालो, ये एंगल थीटा है, ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करो, उससे ये नॉर्मल है, ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, एंड ऑल दैट करो. So are you getting this or not? You have to judge. ठीक है? But remember the result. Result is more important. 360 minus theta. This is the deviation, final deviation cost. Remember this result. Okay? और इसमें हाँ, another important result for plane mirrors you should remember. Guys, बहुत क्वेश्चन इस पे बनते हैं. कोई नोट तो नहीं कर रहा भाई? यू नोटेड दिस, राइट? अब जो आपको बताने जा रहा हूँ प्लेन मिरर्स पे, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आजकल. फील्ड ऑफ व्यू पे, जैसे मान लो आपका ये प्लेन मिरर है, यू कैन जस्ट पुट दिस हेडिंग एज फील्ड ऑफ व्यू. लेट्स से दिस इज माय प्लेन मिरर. मान लो ऑब्जेक्ट इसके सामने ना होगे, कहीं यहां पे है. दिस इज माई ऑब्जेक्ट. द पॉइंट इज कि विल देयर बी इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? ये तो इसके सामने है ही नहीं. विल देयर बी इमेज? इमेज वुड बी देयर, डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग. ठीक है. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बाउंड्री रेज है उसको लेते हैं. We'll take one ray like this, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है. एंड देन यू कैन टेक वन रे लाइक दिस, एंड दिस गेट्स रिफ्लेक्टेड लाइक, and these two rays when you produce backward, obviously they are bound to create an image. थोड़ा सा ये सही नहीं बन रहा है because my angle of incidence and reflection are not exactly same, but you can imagine that these two rays would be actually creating an image of this object. ना थोड़ा सा भी मैंने सही कर दिया इसको, राइट. देयर विल बी एन इमेज, बट द क्वेश्चन हियर इज, विल दिस इमेज बी विजिबल टू एवरीवन irrespective of your position here? The answer is no. Any viewer in this region,
अगर आप यहां से व्यू कर रहे हो, इन दो एक्सट्रीम रेज के बीच में से, एक्सट्रीम रेज ये वाली और एक्सट्रीम रेज ये वाली, अगर आप यहां पे कहीं पे हो तब तो आपको ये दिखाई देगा, बट डियर अगर आप यहां पे आ गए हो तो लाइट रेज कहां पहुंच रही हैं आपके पास? When we see an image or when we see an object depends on one and only one fact. The light rays should reach our eyes after being reflected directly from that object or after getting reflected from some other mirror or something. Ultimately, the eye, अपनी eyes को अगर आप यहाँ पे रख रहे हो तो यहाँ पे rays should reach. Now then I will do the rest. It will trace back and see, oh अच्छा this is the image. यहाँ पे अगर आप हो, so there are no rays actually. अगर if this mirror would have been extended till this point, then obviously you will be able to see the image. But in this orientation, the image is till this point. Only this much is the field of view. So this region is called your field of view. This is called field of view. आपने पढ़ा होगा कि field of view प्लेन मिरर से काफी कम होता है. Grade 10 में you must have studied in the rear view mirrors of vehicles we generally use convex mirrors. और उसमें रीजन वही था कि convex mirror का field of view काफी enhanced रहता है because of their diverging nature. They diverge the rays. Because of diverging nature, you get a enhanced view of back side. अगर मिरर मेरे सामने, प्लेन मिरर का भी field of view होता है but slightly lesser. ठीक है? So this is the definition of field of view. I cannot put it in words, but it is just to be felt that if you are in a region where you can observe an image, that means you are in the field of view. ठीक? Okay. Noted? So last thing for today, जो मैं करने जा रहा हूँ अभी, height of plane mirror needed to see a complete object. Height of plane mirror needed to see a complete object. आप लोगों को क्या लगता है कि अगर मुझे लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है या लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग लाइक दिस, ठीक है, दिस मच टॉल एंड देयर इज अ प्लेन मिरर इन फ्रंट ऑफ हिम, डू यू थिंक or do you feel that I need a plane mirror of same height, minimum same height to see the image completely? Any guesses? What is the height of the, or what is the length of the mirror so that I can see this object completely in the mirror? Distance. Would it depend on the distance? Yes. It would depend on the distance, but let's say you adjust the distance, right? आगे पीछे, तो उस केस में आपको optimally कितना minimum length you would need to see your image completely? If this is height h, guys, you need h by 2. Okay, and again you have to take the boundary rays. The boundary rays like ये वाला एक ray, ठीक है, that reflects like this, and one boundary ray like this that reflects like this. Okay, so this way you can see. अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करो यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यू टेक आई थिंक ये एक्सटेंड करो आप पीछे, ये एक्सटेंड करो आप पीछे, एंड यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, right? And then with basic geometry it can be proven that this and this are actually 1:2 ratio. This is 1, sorry, this is 2:1, this is 2, this is 1. So you, if your height is h, the minimum length of the mirror which will show your complete image is h by 2. अगर आप 6 feet tall हो तो
so you need a mirror of 3 feet to see your image. ठीक है, इसका डेरिवेशन करने में टाइम जाएगा, बट आप ये रिजल्ट याद रखो, काफी बार क्वेश्चन आता है. ओके, ठीक है. सो टुडे व्हाट वी हैव कवर्ड, very we have not started 12th का syllabus by the way. ठीक है, we have covered introduction, basics of reflection and some concept of plane mirror. Now from next class onwards we will be starting your grade 12 syllabus, which is reflection by spherical surface. इसमें first derivation we have to understand, which is understand and learn, which is the mirror equation. Mirror equation आप लोगों को याद होगी ना, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. So guys, ये इसका derivation आपके स्कोप में नहीं था 10th में, just use it. You remember, right? You might have used this, the sign convention and all. इसका derivation हमें करना है. So you will be recalling some concept of similarity and congruency and all that. So इससे हमको derive करना है. Again, ये derivations सारे के सारे वैसे हैं कि आप इसको करोगे फिर से भूल जाओगे, तो derivations आपको समझने हैं, उसको पार्क कर देना है, उसको एग्जाम टाइम में फिर से रिकॉल करके लिख के देखना. क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं हम. ठीक, ओके. किसी को आपको डाउट्स है, तो स्टॉप द क्लास हियर एंड स्टार्ट विद डाउट्स. अगर डाउट नहीं है तो इट्स यू कैन जस्ट रिवाइज व्हाटएवर यू वांट टू रिवाइज फॉर नेक्स्ट टाइम. और जिसके डाउट है दे कैन गिव डाउट्स.